Aryan, Shruti, any doubts? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लिए. So we are dealing with NCERT +1. Aryan, you want to ask something? No, sir. Alright, चलिए आगे बढ़ते हैं. So हमारा जो आज का कंसर्न है that is to deal with the minerals and rocks, fifth chapter in the NCERT on Geography +1. तो अर्थ की कॉम्पोजिशन एक तो हम देखते हैं कि मेजर एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट मैंटल कोर, तीन एस्पेक्ट्स हैं. और अगर हम ओवरऑल अर्थ की देखें तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा. ठीक है, क्रस्ट की कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, मैंटल की डिफरेंट है, कोर की डिफरेंट है. ये तो हमने बेसिक पहले भी बात किया था, सियाल, सीमा, निफ, इस तरह से, है ना. तो सी पहले ओवरऑल कॉम्पोजिशन पे चलते हैं. सो इंटायर अर्थ केमिकल कॉम्पोजिशन जब देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे पास आयरन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन. दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द इंटायर अर्थ. The first three you have to remember: iron, oxygen, and silicon. So you can remember it by IOS. Easy. Okay. अगर क्रस्ट की बात करेंगे तो वहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है. वहां पे आयरन फोर्थ नंबर पे आता है, तो इट इज OSAI, ओसाई. ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन, ये फर्स्ट फोर याद रखने. बाकी भी कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्टीमेटली पूरी का पूरा पीरियोडिक टेबल मिलेगा. बट composition by weight, percentage, top four only you have to remember. इधर IOS, इधर OSI, इस तरह से याद रखें. तो पूरा अर्थ का देखेंगे तो आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, these are the top three. And if you look at only the crust part, then you got oxygen, silicon and aluminium, then iron. So this is the situation. So about 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements. So these 8 elements. We don't need to remember the entirety of these, like I told you. अच्छा, अब प्रीलिम्स में वो इसी तरह से इसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. उस टाइम पे ध्यान बस इतना रखना है कि क्या वो कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ पूछ रहे हैं या अर्थ क्रस्ट पूछ रहे हैं. इतना सिंपल सा बस एक वर्ड का डिफरेंस पड़ता है यूपीएससी प्रीलिम्स में. ठीक है, ओके. Now the elements in the earth crust are rarely found extensively but are usually combined with other elements. किसी ना किसी तरह से हम बोलते हैं ना आयरन ओर, वी डोंट से आयरन, डायरेक्टली नहीं मिलता. तो फॉर एग्जांपल वी माइट हैव Fe2O3 और Fe3O4, दैट इज फेरिक ऑक्साइड और फेरोसो फेरिक ऑक्साइड. इस तरह से दो उसके एलिमेंट्स है जिसके कॉम्बिनेशन में मिलेगा. और ये Fe3O4, Fe2O4, ये भी इनको जो नॉर्मल नेम है दे यूज हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, दो तरह से इनको बोलते हैं. ठीक है, तो मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो जो मिलता है दैट इज अ मिनरल, ओके, हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड a definite chemical composition and physical properties, while a mineral is composed of two or more elements. जैसे आपने अपने घर में कोई भी एक नॉर्मल अगर कोई मिनरल देखा हो तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल देख सकते हैं. ठीक है, तो कोई क्रिस्टल देखा होगा तो उसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स रहेंगे. But some single element minerals like sulfur, copper, silver, gold, graphite are found. ये अपने आप में किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करते और नेचर में एज इट इज आपको कॉपर जो है वो कॉपर जैसा ही मिलेगा, या सल्फर सल्फर की फॉर्म में ही मिलेगा. ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बाहर आने के बाद, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने के बाद. जैसे सिल्वर थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो थोड़ा ब्लैक सिल्वर ऑक्साइड बनेगा, वो नजर आता है, थोड़ा सा ग्रेश ब्लैक उसके ऊपर लेयर बन जाती है. दैट इज देयर. गोल्ड ज्यादा रिएक्टिव है नहीं तो एज इट इज ही मिलता है. ठीक है, इट इज लाइक दिस. सो number of elements making up the lithosphere are limited and they are combined in many different ways to make up many varieties of minerals. These are there are at least around 2000 minerals on the earth crust. So anyway say we are able to extract the elements that we need. Okay, the basic source of all minerals is the hot magma in the interior of the earth. So जैसे जैसे वो ऊपर आता है उसके साथ साथ we get so many minerals. Okay, then minerals such as coal, petroleum, natural gas and organic substances found in solid, liquid and gaseous form respectively. So even coal, petroleum, ये सब भी minerals हैं. ठीक है, now physical characteristics जो हैं वो minerals को differentiate करने में help करते हैं. तो आमतौर पे minerals के अंदर there is an external crystalline form, बाहर से दिखने में एक particular crystalline form होगा.
So that is one basic aspect of any mineral. Then there are various cleavages or cleavage tendencies to break in given direction. कि mineral के ऊपर कोई भी physical stress आएगा तो उसके बाद टूटेगा. Okay, so that can be there. Then there can be fractures, luster, color, streak, transparency, structure, hardness. ये सारी चीजें आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी एक पर्टिकुलर मिनरल को दूसरे मिनरल से डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल रहते हैं. If you just look at any mineral, let's have a look. Let's have a look at a quartz crystal. How does it look like? And then you might even identify. आपके घर में कहीं ना कहीं अगर पड़ा होगा तो. So this is the quartz crystal. क्या आमतौर पे ये क्लियर आपको मिलेगा और ये जो कैंडल्स हैं ये बनाई जाती हैं. इन नेचर इतने थिक कैंडल्स नहीं बनते, वो बहुत फाइन कैंडल्स होते हैं लाइक दिस. ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना, इन नेचर इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. जब माग्मा आपका सॉलिडिफाई हो रहा है तो इस तरह से उसके क्रिस्टल्स बनेंगे बाहर निकलने के बाद. ठीक है, ब्यूटीफुल. वेरियस कलर्स आर देयर. ये कोई ना कोई इम्प्योरिटी जब इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएंगे. ओके, फाइन. नाउ मूविंग बैक टू योर एनसीईआरटी. नाउ some major minerals and their characteristics. So first is feldspar. So feldspar is silicon and oxygen. They are the common elements in feldspar. Okay, and along with that there might be any other. So sodium, potassium, calcium, aluminium, ये जो बाकी के हैं ये impurity के level पे रहेंगे. Half of the earth crust is composed of feldspar. So सबसे important हमारे पास जो mineral है वो feldspar है. It has light cream to salmon pink color and it is used in ceramics and glass making. तो ज्यादातर अर्थ क्रस्ट पे अपने को जो क्रिस्टल मिलने वाला है या मिनरल मिलने वाला है that is feldspar. Now again, unless and until you look at the image of feldspar, you would hardly identify कि भाई feldspar होता क्या. एक बात है ना. तो आप जब राजस्थान की तरफ ट्रैवल करेंगे तो आपको पिंकिश स्टोन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, सड़क के इधर उधर भी मिल जाएंगे. So that is feldspar like this. ठीक है, दिख गया feldspar ऊपर वाला है. Yes, sir. तो easy to identify. आमतौर पे आपको इधर उधर देखने को इस तरह के पत्थर मिलेंगे. Okay, this is silicon and oxygen mainly, maybe little bout of sodium, potassium, calcium or aluminum. Then the second most important crystal is quartz. So this consists of silica. So silica means silicon के साथ कुछ aluminium, कुछ oxygen, ये सब का combination है. Aluminosilicates होते हैं आमतौर पे. Then it is a hard mineral virtually insoluble in water. जो आपको सबसे पहले crystals दिख रहे थे वो quartz crystals थे. And it's a hard mineral virtually insoluble in water, white and colorless, used in radio and radar. The most important components of granite. Okay, that is quartz. Then there is pyroxene. So this consists of calcium, aluminium, magnesium, iron, and silica. It forms 10% of the earth crust, and it is commonly found in meteorites, green and black in color. Then there is amphibole. This is aluminium, calcium, silica, iron, and magnesium. They are the major elements. It is 7% of the earth crust, green or black in color. And hornblende is another form of amphibole. आमतौर पे asbestos industries में use करते हैं. तो asbestos sheet shading के लिए use होते हैं ना, greenish plastic greenish sheets होते हैं, that is amphibole. Then there is mica. So it is potassium, aluminium, magnesium, iron, and silica. So 4% of the earth crust, commonly found in the igneous and metamorphic rock, and it is used in electrical instruments. Mica. Then olivine. So this is magnesium, iron, and silica. आपको सिलिका तो हर एक में नजर आ रहा है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड. तो बाकी सब में छोटा छोटा एड ऑन. So they are the major elements. It is used in jewelry, and this is usually greenish crystal and often found in the basaltic rock. तो अगर आप कुंदन ज्वेलरी ऐसा कुछ देखते हैं तो उसके अंदर ऐसे ग्रीन छोटे छोटे क्रिस्टल्स लगे होते हैं. That's olivine.
Then besides the main minerals, other minerals like chlorite, calcite, magnetite, hematite, bauxite, barite, etc. also present in certain quantities. अब यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो पहला तो क्वेश्चन फ्लेक्सपार पे ही बनता है कि इट इज हाफ ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. देन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन दे आर द मेजर एस्पेक्ट्स है. देन क्वार्ट्ज क्रिस्टल इंपॉर्टेंट है दूसरा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. तो क्वांटिटी के हिसाब से फ्लेक्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्ट, इस तरह से FQPA इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यू कैन रिमेंबर, ठीक है. फिर इनका पर्टिकुलरली यूजेज क्या है, व्हाट इज यूज्ड फॉर व्हाट. केमिकल कॉम्पोजिशन पूछने के बहुत कम चांसेस होते हैं. आमतौर पे उनके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन पूछा जाएगा मिनरल्स के अंदर, तो यहाँ पे लिखे ना पोटाशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, वो तब पूछा जाएगा अगर उसका बहुत ज्यादा कोई यूजेज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अब ओलिविन का ज्वेलरी में यूजेज होता है तो मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका है, ठीक है. माइका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है तो ये इंपॉर्टेंट है. सिर्फ माइका और ओलिविन ये याद रख लो, बाकी ठीक चलेगा. देन metallic and non-metallic minerals. So this is the way we divide the minerals and study them. Okay. Metallic में क्या आएगा, metals आएंगे हमारे periodic table के अंदर से, और non-metallic में non-metals आएंगे. So these minerals contain metal content and can be subdivided into three. There are precious metals, ferrous metals and non-ferrous metals. ये as it is prelims में question आ सकता है. Match the following. Which of the following are precious, ferrous and non-ferrous? तो प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम इस तरह के मेटल्स हैं जिनकी ज्वेलरी जैसी चीजें बनती है. फेरस मेटल के अंदर आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफन मिक्स्ड विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील. फॉर एग्जांपल कार्बन और निकल मिक्स करते हैं हम, ठीक है, सो स्टील बनाने के लिए. बट यहाँ पे आयरन के साथ निकल आ सकता है, कार्बन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है. देन नॉन फेरस मेटल्स, सो दिस इंक्लूड्स मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक. तो फेरस बेसिकली मीन्स आयरन, नॉन फेरस मीन्स आयरन छोड़ के बाकी सारे मेटल्स जो प्रेशियस नहीं है. तो वो कौन से आ जाएंगे, लेड, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है. तो ये डिवीजन प्रीलिम्स के लिए अच्छा क्वेश्चन बनती है यूपीएससी के अंदर. देन नॉन मेटेलिक मिनरल्स, सो these minerals do not contain metals, simple, they contain non-metals. So here there are sulfur, phosphate, nitrates, etc. So for example they will have calcium sulfate, copper sulfate, इस तरह से सल्फेट्स आएंगे, ठीक है. सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स. गुड एग्जांपल इज दिस. देन रॉक्स, तो रॉक हमारे पास तीन तरह के होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री. ये तीन तरह के रॉक्स हैं, तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं. पेरेंट रॉक इग्नियस है जो कि माग्मा की कूलिंग के बाद बनता है, ठीक है. अब सेडिमेंट्री रॉक जो है वो बेसिकली सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक आया है, तो सेडिमेंट के अंदर बहुत सारी मिक्सिंग होगी. मेटामॉर्फिक रॉक इज समथिंग व्हिच इज द कन्वर्टेड रॉक अंडर हीट और प्रेशर. इग्नियस रॉक अंडर हीट और प्रेशर विल जनरेट सर्टेन काइंड ऑफ अ मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही ये है चेंजिंग द फॉर्म, ठीक है. सो ओरिजिनल फॉर्म से चेंज हो रहा है कहीं. तो सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन सकता है, इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक बन सकता है. मेटामॉर्फिक से फिर चाहे वो इग्नियस की तरफ चला जाए चाहे सेडिमेंट्री की तरफ चला जाए, ये उसकी चॉइस है. तो इस तरह से देयर इज अ रॉक साइकिल, one changing into the another. Okay, so let's have a basic look at what are these rocks. So the Earth's crust is composed of rocks. It's an aggregate of one or more minerals. कोई नहीं है कि ऊपर के कुछ दिए हुए मिनरल्स में से एक ही होगा, अलग अलग हो सकते हैं. Rock may be hard or soft in varied colors. So for example, granite is hard, soapstone is soft, gabbro is black, quartzite is milky white. सबके color, texture सब varying है. They do not have a definite composition of mineral constituents. क्रिस्टल और रॉक में यही फर्क है. क्रिस्टल के अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डेफिनेट रहेगा. जैसे आपने जो ऊपर क्रिस्टल्स पढ़े अभी, उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एक जो कॉम्पोजिशन लिखा है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा. रॉक के अंदर ऐसा कोई कॉम्पोजिशन नहीं है फिट, कोई अलग अलग क्रिस्टल्स जुड़ के एक रॉक बन जाता है, ठीक है. फ्लेक्सपार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन दी रॉक. वो तो हमने पढ़ाई कि फ्लेक्सपार तो भाई 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट है और क्वार्ट्ज सेकंड नंबर पे, तो ये मिलके दोनों रॉक्स में किसी ना किसी रॉक में मिल ही जाएगा. Then, the science of rocks is called petrology. So
बस इतना याद रखना. Then, as there is a close relation between rocks and landforms, rocks and soils, a geographer requires basic knowledge of rocks. तो इसलिए geography के अंदर ये भी पढ़ाते हैं. So इसीलिए we got three types: igneous rocks, that is solidified from magma and lava; sedimentary rocks, that is a result of deposition of fragments of rocks by the exogenous process; then metamorphic rock, formed out of the existing rock underlying or undergoing recrystallization. कैसे कैसे बनते हैं, क्या इनके अंदर होता है, लेट्स सी. सो igneous rock कैसे बनता है? So they form out of the magma and lava from the interior of the earth, and they are known as the primary rock because इसी से बाकी के rocks बनेंगे, तो ये primary है. Parent rock भी बोल देते हैं. Igneous literally means fire. मारुति वालों ने गाड़ी लॉन्च किया ना, igneous. So they are formed when magma cools and solidifies, and you already know what magma is. आपने पहले पढ़ लिया. When magma is in its upward movement, it cools and turns into solid form, and it is called igneous rock. तो हमने पढ़ा sills, dikes इधर-उधर solidify हो सकता है. Okay. They can be classified on the basis of texture. How are they classified? Let's see. Texture depends upon the size and arrangement of grains and other physical conditions. If molten material is cooled slowly at a great depth, mineral grains may be very large. Sudden cooling results in small and smooth grains. ठीक है, तो अगर तो धीरे धीरे सॉलिडिफाई करने देंगे तो क्रिस्टल साइज भी बड़ा होगा, और अगर एकदम से सॉलिडिफाई करेगा तो क्रिस्टल साइज बहुत छोटे फाइन क्रिस्टल्स बन जाएंगे. ओके. इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग, इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन. तो जितनी धीरे धीरे कूलिंग करेंगे उतने बड़े साइज ऑफ ग्रेन बनेंगे, ऐसे समझिए. ठीक है. तो नाउ ग्रेनाइट, गब्रो, pegmatite, basalt, volcanic breccia, and tuff are some of the examples of igneous rock. UPSC में सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछते हैं. ग्रेनाइट, गब्रो और बेसाल्ट, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. ठीक है. ओके. सेडिमेंट्री रॉक्स. नाउ सेडिमेंट मतलब किसी का कुछ टूटा हुआ हिस्सा है ना, वहीं से आया. So it comes from the Latin word sedimentum, that means settling down. जैसे नदी के साथ साथ कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर चलते चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे नदी के बेड पे सेटल डाउन हो जाता है. So that is sediment. Okay. So rocks which are igneous, sedimentary or metamorphic of the earth's surface are exposed to denudational agents. Denudational मतलब जो उसको तोड़ देते हैं. For example, water and air. So and are broken up into various sizes of fragments. बारिश होती है तो फॉर एग्जांपल कोई पत्थर है, टूट जाएगा धीरे धीरे करके, उसका कुछ पार्ट ऊपर से पॉलिश होता रहेगा. या दैट वे. हवा चलती है तब भी ऐसे होता है. Such fragments are transported by different exogenous agencies and deposited. ट्रांसपोर्टेशन विंड से भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन हवा से भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन बायोलॉजिकल एजेंट से भी कर सकते हैं. या तो these deposits through compaction turn into rock. नदी के तल पे अगर देखा जाए तो कई बार आप पाएंगे कि बड़े फाइनली राउंड स्टोन्स आपको मिलते हैं. वो क्यों मिलते हैं राउंड स्टोन्स? क्योंकि वो पानी के साथ साथ पॉलिश होते हैं. एंड अभी कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि मिट्टी, जब आप वो नदी जहाँ पे समुद्र में मिल रही है, तो वो जो मिट्टी पीछे से लेके आया पूरा फाइन सेडिमेंट्स, वो वहां पे सेटल हो रहा है. सेटल होते 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 दे विल स्टार्ट गेटिंग सीमेंटेड टुगेदर एंड दे विल फॉर्म बिग ह्यूज बोल्डर्स ऑफ रॉक्स. So they are cementing or compacting together through the action of water. Okay. Now, this process of compaction is called lithification. जब ये sediments इकट्ठे होकर जुड़ जाएं, then we call rock formation or lithification. Lith जो है ना वो rock या lithosphere के साथ ही जुड़ा हुआ है. Now, in many sedimentary rocks, the layers of deposits retain their characteristics even after lithification. Hence, we see a number of layers of varying thickness in sedimentary rocks like sandstone or shale. आप कभी भी पहाड़ी इलाके में जाएंगे, आपको इस तरह की लेयर्स मिलेंगी सैंडस्टोन के अंदर. अगर शिवालिक्स में जाएंगे फॉर एग्जांपल तो उधर सैंडस्टोन मिलेगा. ठीक है. तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर क्यों आता है? क्योंकि वहां पे जब उसको धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो रहा था, उस टाइम पे आपको इस तरह के लेयर्स बन जाते हैं. ठीक है. So generally that's the situation of a sandstone. Let me show you. Here.
तो यहाँ पे देखिए अब अलग अलग लेयर्स जो हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट हुई हुई है, बड़ा क्लियरली विजिबल है. तो दैट सैंडस्टोन. फाइन लेयर्स दे गेट कॉम्पैक्टेड टुगेदर, एक के ऊपर एक जमा होती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड देन दे फॉर्म दैट sedimentary rock. Okay? So this is how it's visible in the mountainous areas also. From far away, very clearly visible layers. Okay. Now, depending upon the mode of formation, sedimentary rocks are classified into three major groups. So they are mechanically formed, such as sandstone. अभी जो देखा आपने वो sandstone है. Limestone, shale, or loess. Then there are organically formed, for example, geyserite, chalk, limestone, or coal. Then they are chemically formed like chert, limestone, halite, and potash. Limestone आपको दोनों जगह मिलेगा, organically भी और chemically भी, दोनों जगह मिलता है. Okay. So three basic types of sedimentation process and compaction is then happening. पहले fine बन गया, उसके बाद इकट्ठा होकर जुड़ गया आपस. ठीक है. So mechanically formed, organically formed, and chemically formed, three kinds. Then comes the metamorphic rock. So metamorphic rock basically is metamorphosis का मतलब ही है change of form. Here the form is changing under three basic actions: pressure, volume and temperature. आमतौर पे जो segments काम कर रहे हैं वो pressure and temperature होता है. Volume कम होएगा तो pressure अपने आप पड़ना शुरू हो जाएगा. So metamorphism occurs when the rocks are forced down to lower levels by tectonic process, or when molten magma rising through the crust comes in contact with the crystal rock, or the underlying rocks are subjected to great amount of pressure by the overlying rock. तो तीन तरह से है. अब जैसे हमने देखा था कि ओशन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब आपस में टकराएंगे, कन्वर्जेंस बाउंड्री होगा, तो ओशियानिक क्रस्ट जो है दैट विल स्टार्ट गोइंग अंडरनीथ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. At that point of time, what is happening? Metamorphosis of the rocks. Yeah. Similarly, when the hot magma from the below bottom of the earth starts coming up, at that point of time, जो अर्थ का रॉक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, जिसके थ्रू वो ऊपर आ रहा है, उसके साथ कांटेक्ट में आके भी तो हीट अप्लाई कर रहा है. ऐसे ही किसी पहाड़ के नीचे के जो पत्थर हैं उनके ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ रहा है. अंडर दैट प्रेशर ऑल्सो दे आर अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस. For example, coal has been formed due to metamorphosis only. Yeah, although it's a sedimentary rock, but the process of formation of coal is metamorphosis. How? Because years and years of pressure and heat on the various sediments, organic sediments like dead fish, carboniferous plants, and all, that has led into what is coal today. Okay? Clear work? Hello. Yes, sir. So what is happening here? Metamorphism is a process by which already consolidated rock, पहले से पत्थर पहाड़ कुछ है, undergoes recrystallization and reorganization of material within the original rock. It's already a rock. Now it is going to change. So mechanical disruption and reorganization of the original minerals within the rock due to breaking and crushing without any appreciable chemical change is called dynamic metamorphism. मैं सिंपली एक पत्थर तोड़ रहा हूँ ना, तो दैट इज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म. अगर वो नेचर के अंदर टूट रहा है अपने आप किसी प्रेशर की वजह से, लेट्स से लैंडस्लाइड हो गया, तो जो नीचे के पत्थर थे वो टूट के छोटे हो गए. दिस इज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म. ऑलराइट. बारिश पड़ रही है तो ऊपर से जो केमिकल डिसोल्यूशन हो गया डायनामिक हिलजुल होने के बाद, तो अगेन नदी के बहाव के साथ पत्थर निकल गए. दैट इज अगेन डायनामिक मेटामॉर्फिज्म. No chemical change is happening, just the mechanical strength, physical stress की वजह से टूट जाएगा. The material of the rock chemically alters and recrystallizes due to thermal metamorphism. Essentially, the chemical change will happen when heat is applied. Understand just this much. Okay. So, if it is just pressure, nothing will happen at the chemical level. If it has heat also, then the chemistry will start changing. So, there are two types of thermal metamorphism: contact and regional. In the contact metamorphism, rocks come in contact with hot intruding magma and lava
and the rock material recrystallizes under high temperature. तो कांटेक्ट सिंपली मतलब क्या है, लावा के साथ कांटेक्ट में आने के बाद हाई टेम्परेचर के अंदर चेंज करेगा. Okay? So quite often new materials form out of the magma or lava are added to the rock. Obviously अब साथ में जब मेल्ट कर रहा है तो उस टाइम पे जो magma का मटेरियल है वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, मेटामॉर्फिक का इग्नियस वाले में चला जाएगा. ठीक है. Then in the regional metamorphism, rocks undergo recrystallization due to deformation caused by tectonic shearing together with high temperature or pressure or both. So एक तो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट चल रही है, मतलब फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर स्पेस इट इज बीइंग शिफ्टेड. ओके, सो रीजनल लेवल पे ये स्ट्रेस उसमें क्रिएटेड, साथ में टेम्परेचर या प्रेशर में भी चेंजेस हैं. दैट इज लीडिंग टू the regional metamorphism as we talked about in the ocean and continental crust convergence boundary. So in the process of metamorphism, in some rocks, grains or minerals get arranged in layers or lines. Such an arrangement of minerals or grains in the metamorphic rock is called foliation or lineation. तो यहाँ पे line format में crystal में सारी चीजें arrange हो जाएंगी. Yeah. So that's called foliation or lineation. So let me show you lineation. Metamorphic rocks. How it looks like. So this kind of lined pattern. Okay. That will get formed. Lineation. Gold जो है ना, वो इस तरह के lineation rocks के अंदर बड़ा अच्छे से preserved मिलता है. Lines के बीच में gold होता है. ऐसे. ठीक है. So I have a rock. I can show you. Wait for 1 minute. Do you want to see? So there is a black crystal with gold in between, gold lineation. Just give me 1 minute. Okay, ready? Let me clean it up a bit for you so that you can see it clearly. Here, I got the entire collection of rocks like this. Can you see? Is it clear in the camera now? So this is lineation. जो बीच में है, that is gold deposits. Yeah. So this is how the gold naturally also occurs. अब ये सारा जो बाकी का रॉक है, अगर आप यहाँ से देखोगे, ध्यान से देखो, तो you will see lined kind of patterns. ऐसे लगता है जैसे पेंसिल लेड होता है ना? Yes, sir. So it's like that. So this is how lineation happens. You have to really feel it to feel the lines also. So it's all there. ये सारे linear patterns है. ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे पेंसिल लेड्स हैं और उनके बीच में सारे गोल्ड डिपॉजिट्स हैं. ये जो ऊपर की लेयर है, दिस इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, राइट है. दिस वाइट लेयर ऑन टॉप, दैट्स द क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो साइड में कहीं ना कहीं हो रहा है. तो उसको केमिकली रिमूव किया गया, तो अंदर जो रॉक है दैट इज गोल्ड इन द स्लीव्स. ऑलराइट, चले वापस. मेरे पास इस तरह के 20 लॉक की कलेक्शन होगी कम से कम. चलिए आगे बढ़ते हैं, पर सारे उठाने लायक नहीं है, बहुत भारी भी है कुछ कुछ. Because magma, you know, it gets heavily consolidated and it's very difficult to carry. Now, sometimes the minerals or the materials of different groups are arranged into alternating thin and thick layers appearing in light and dark shades. So such structure of the metamorphic rock is called banding. And rock displays banding called banded rock. तो आपको कहीं पे थिक लेयर, कहीं पे थिन लेयर, कहीं पे थिक, कहीं थिन, ऐसा नजर आएगा तो बैंडेड रॉक बोलते हैं. ठीक है. देन टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, सो डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल रॉक्स. डेफिनेटली जिससे बना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट तो नजर आएंगे ही ना. आप कोई सब्जी बना रहे हो, उसमें
मटर डाल दिया, पनीर डाल दिया, गाजर डाल दिया, जो भी डालेंगे मिक्स वेज के अंदर, वो थोड़ा थोड़ा पता तो चलेगा ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, अनलेस एंड अनटिल यू ब्लेंड देम। सो ऐसी ब्लेंडिंग तो हो नहीं रही, थोड़े बहुत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता चलेंगे कि कहाँ से आए। So they are therefore classified into two categories. One, foliated rocks, and other is non-foliated rocks. So gneissoid, granite, sienite, slate, schist, marble, quartz are some of the examples of the metamorphic rocks. तो इनकी आमतौर पे ये slate, schist, marble और quartzite ये UPSC के favorite, ठीक है? Then is the rock cycle. So they don't remain in their original form. एक से दूसरे में change करते रहें continuously. Okay. So rock cycle is the continuous process through which old rocks is transformed into new one. So if you pick up one rock, you can say, how much age will be there in that one rock. Ultimately, तो जब से अर्थ बना सारे पत्थर तब से चल रहे हैं ना। आप सोच के देखो, अभी हो क्या रहा है कि जो माग्मा ऊपर आ गया और सॉलिडिफाई कर गया, दैट इज द इग्नियस रॉक, वी कॉल इट न्यू बिकॉज इट इज जस्ट कंसोलिडेटेड, करेक्ट? But the material of that magma that is there since the earth only. सोच के देखो, वो तो तब से ही चल रहा है ना। So solidification कब हुआ, हम उससे age of rock ले लेते हैं। Okay. Now the igneous rocks are the primary, and other rocks, sedimentary and metamorphic, are created from this primary rock. So igneous rock can be changed into metamorphic rock. So इसका चेंज किस सेडिमेंट्री में डायरेक्टली नहीं होगा, igneous से metamorphic ही बनेगा. The fragments divided out of the igneous and metamorphic form into the sedimentary rock. तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े फ्रैगमेंट करेंगे, उससे फिर आगे जाके सेडिमेंट्री रॉक बने. Sedimentary rock themselves can turn into fragments, and the fragments can be the source of formation of a sedimentary rock. Then the crustal rock, once formed, may be carried down into the mantle. एक बार let's say sedimentary है या कुछ भी है, तो फिर वापस mantle में चला जा सकता है, ocean continental convergence boundary पे. तो convergence boundary पे फिर नीचे जाएगा, फिर से magma igneous rock बन जाएगा. It's like that. It will continue. So this way, so you got various sediments going from one form into the another. Let me show you on this one, rock cycle. This is a clearer way to understand rock cycle. So igneous rock basically, will melt. Magma सबसे पहले starting में लेते हैं. It crystallizes into igneous rock. अब उसके ऊपर बारिश पड़े, उसकी erosion हो या उसमें छोटे-छोटे deposits इधर-उधर से आके बैठ जाएं, तो then that is the sediments. It will break down into the sediments. Then these sediments will cement and compact together to form sedimentary rock. This sedimentary rock under heat and pressure changes into metamorphic rock. This metamorphic rock, after getting melted, जैसे नीचे चला जाएगा तो, then it will again become magma and the cycle continues. ठीक है? Moreover, the igneous rock under heat and pressure can become metamorphic rock. The metamorphic rock under weathering and erosion can again form into sediments, and these sediments can again compact into a sedimentary rock. The sedimentary rock can also be melted, and all the sediments, organic sediments will be burnt out, and then that will also become magma and again igneous rock. आपस में हमेशा convert करते रहेंगे. Anytime you are going into igneous rock, the important process is melting. Anytime you are going into metamorphic rock, the important process is heat and pressure. Anytime you are going into sedimentary rock, the important process is weathering, erosion and deposition. ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करने वाली. ठीक बात है? हेलो हेलो. Yes, sir. At the forming of igneous rock, there is crystallization. At the forming of metamorphic rock, there is heat and pressure. At the forming of sedimentary rock, there is always compaction and cementation. मतलब इकट्ठे होकर जुड़ रहे हैं particles. ठीक है?
तो ये रॉक साइकिल ज्यादा आसान है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा वहां पर आके टेंशन दे रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दैट एंड्स द चैप्टर ऑन रॉक्स एंड मिनरल्स। वाज इट इजी, अंडरस्टैंडेबल? इसमें क्वेश्चन Yes, sir. जो यूपीएससी पूछता है वो इन्होंने नहीं दिया हुआ। वो क्या क्वेश्चन है कि अंडर मेटामॉर्फोसिस व्हाट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, ये नहीं दे रखा दिस टेबल particularly. So granite under pressure will convert into gneiss. Clay and shale under pressure will convert into schist. Sandstone will convert under heat into quartzite. Clay under heat will become slate, which under heat will then become phyllite. Coal under heat will become anthracite and graphite, the graphite lead that you use in your pencil. Limestone under heat will become marble. So these are the various forms of metamorphism. ये बहुत important है, prelims में यूपीएससी में पूछते हैं, ठीक है? So यही forms को इधर भी दिया गया। All right. So don't worry, the notes are with you. Then geomorphic processes. अब geomorphic process में हमें क्या समझना है कि अर्थ के अंदर चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं। तो geomorphic process जो है वो कुछ स्लो हैं और कुछ फास्ट हैं, कुछ अर्थ के अंदर हो रहे हैं, कुछ अर्थ के बाहर हो रहे हैं, ठीक है? इस तरह से जियोमॉर्फिक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस समझने के लिए बड़ा सिंपल सा एक टेबल है दैट आई विल शो यू। गिव मी अ मोमेंट। सो देयर इज एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, दो तरह के जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, एक अर्थ के बाहर चल रहा है, एक अंदर चल रहा है, ठीक है? एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक का बेसिक सा मतलब ये है। एंडोजेनेटिक अर्थ के अंदर एक स्लो मूवमेंट्स हो रही हैं, एक फास्ट या सडन मूवमेंट्स होते हैं। डायस्ट्रॉफिज्म को स्लो मूवमेंट बोलते हैं, सडन मूवमेंट इज एकदम से हो गए। नाउ डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर यू गेट एपी ओरोजेनिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट्स, एंड देन देयर आर ओरोजेनिक और माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट्स। दो तरह की स्लो मूवमेंट्स चल रही हैं। एपी ओरिजिन और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग में सीधा सीधा अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है। अगर तो पूरे का पूरा जो प्लेन है, प्लेट है, वो ऊपर की तरफ चलेगी तो कॉन्टिनेंट बनेगा, अगर नीचे धसती चली जाएगी तो ओशंस बन जाएंगे, ट्रेंचेस बन जाएंगे, ये सब फॉर्म्स बनेंगे। देन ओरोजेनिक और माउंटेन बिल्डिंग, सो हियर इट कैन बी आइदर टू plates coming together, there is compression, or two getting stretched apart, that is tension. If they're coming together, they will yield young fold mountains. If they are being stretched apart, they will yield block mountains. के बीच में से हिस्सा जो है वो टूट के साइड में चला जाएगा, एक इधर ब्लॉक बन जाएगा, एक इधर ब्लॉक बन जाएगा। That way, block mountains will be there. Sudden movements में we already studied earthquakes and volcanoes. So these are the endogenic movements. ठीक है? अर्थ फॉर्मेशन के अंदर या जियोमॉर्फोलॉजी, तो अर्थ की जो मॉर्फोसिस या चेंज इन स्टेट आ रही है वो कैसे आ रही है। एंडोजेनेटिक हो गया। एक्सोजेनेटिक में क्या है, देयर इज वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग मतलब आप कोई एक पत्थर ले लीजिए और वो धीरे धीरे उसको खराब करने के तरीके हैं। देयर कैन बी फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू सम लैंडस्लाइड और समथिंग और सम प्रेशर। देयर कैन बी केमिकल वेदरिंग, ये सबसे ज्यादा पानी की वजह से होती है, बिकॉज पानी जो है इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इवन इट कैन डिसॉल्व स्टील। इमेजिन, गिवन इनफ टाइम दो, ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो, वेट कर रहे हो कि अभी अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। ऐसा नहीं है, विल टेक टाइम, but definitely it is a universal solvent, it can dissolve anything. Okay? Then biological weathering, so it can be done by bacteria which feeds upon certain nutrients in the rock or the soil, so that will also weather the rock. Okay? Erosion, so that may be because of ice, river water, sea, wind, or underground water. Here the dynamic component is more important. With the particular flow, let's say there is a glacier which is sliding past on a land. So as the glacier is sliding past, तो नीचे का पूरा जैसे चटनी बनाते हैं ना, तो ऐसे लैंड भी बिल्कुल प्लेन होता चला जाएगा। ठीक है? Then river water, as the river water flows, so it will cause a lot of erosion along the river bed. So for example, in Himalayas, you will have deep I-shaped valleys because the rivers in Himalayas are antecedent rivers. River पहले थी, हिमालय बाद में आई। इंडस रिवर फॉर एग्जांपल, तो आई शेप्ड गॉड्स मिलती हैं बहुत डीप, उसका कारण ये रिवर वाटर इरोजन। सी की वजह से आपको
आसपास के जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें इरोजन नजर आता है. Then wind and underground water, they also are erosive agents. So all of them are the geomorphological processes. They change the basic structure of the earth that is there. Okay, यही इधर पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस्ड है. So इसमें से अब इम्पोर्टेंट क्या है? So why is the surface of the earth uneven? So this is the question with which the entire study of geomorphology starts. Okay. For this, there are various answers. First, the Earth's crust is dynamic. It keeps changing. It is moving vertically, horizontally, in all ways possible. We have seen that. And it is not moving just at the top, that is the crustal level. It is also moving at the mantle and the core level. Movement is continuous. Even in the core, we say that the Earth has a magnetic field because of the geodynamo in the core. उसमें जो interior part है, internal core, that is solid, और the exterior part, that is the outer core, that is liquid. तो solid core जो है वो liquid core के अंदर rotate कर रहा है. और आप जो magnetic induction motor होती है, कभी उसको खोल के देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है ना? तो इस वजह से अर्थ की magnetic field है. ठीक है? So there is a lot of rotation going on within the earth. So and the movement is going on outside the earth also. So all this is resulting into various kinds of forces which are continuously changing the way earth looks like. So there we come to the geomorphic process, endogenic and exogenic forces. Endogenic process, so the main force behind the endogenic geomorphism क्या है? Let's see. So this energy is mostly generated by radioactivity, rotational, tidal friction and primordial heat from the origin of the earth. तो एंडोजेनिक प्रोसेस के लिए एनर्जी कहाँ से आ रहा है? ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हो सकता है. तो रेडियो एक्टिविटी, अब यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब अर्थ के अंदर भी है. ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सो दे कैन क्रिएट हीट. देन अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. द जियोडायनेमो इज आल्सो देयर. देयर इज टाइडल फ्रिक्शन, primordial heat, that means when it separated from the sun, at that point of time also it was hot burning lava everywhere, so that is called the primordial heat from the origin of the earth. So this energy, due to the geothermal gradients, that means the temperature difference between one part of the earth and the another part of the earth, that is the meaning of geothermal gradient, and heat flow from within induces diastrophism and volcanism in the lithosphere. That means ऊपर की जो 200 किलोमीटर की लेयर है, टॉप लेयर, उसके अंदर डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म किसकी वजह से हो रहा है? जियोथर्मल ग्रेडियंट और हीट फ्लो. There is a difference in temperature in the upper and lower layers of the earth, and from higher temperature to lower temperature, that's how the heat always flows. तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है उसकी वजह से. So due to variation in the geothermal gradient and heat flow from within, crustal thickness and strength, the action of endogenic forces is not uniform, and hence tectonically controlled original crustal surface is uneven. अब ये हर जगह एक जैसा नहीं है. कहीं पे क्रस्ट थिन है, कहीं पे क्रस्ट थिक है. उसके हिसाब से जो नीचे का हीट है वो डिफरेंटली एक्ट करेगा, है ना? रोटेशनल फोर्स डिफरेंटली एक्ट करेगी. तो इस वजह से जो ऊपर का अर्थ दिख भी रहा है वो भी अनइवन है. So now we come to diastrophism. So like I said, there are two formats. There is diastrophism and sudden movement within the endogenetic. So diastrophism में क्या है? So they include the orogenic and epiorogenic. These are the two major things. Then there are earthquakes and plate tectonics. So यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ क्या की है? ओरोजेनिक और एपिओरोजेनिक के साथ साथ सडन मूवमेंट्स भी उधर ही जोड़ दी. हालांकि ये अलग अलग, ठीक है? तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये गड़बड़ है. गलत नहीं है ऐसा कहना, क्योंकि ये भी तो डायस्ट्रॉफी का ही पार्ट है. बस इसको हम सडन मूवमेंट्स अलग से क्लासिफाई करते हैं. Diastrophism word, what does this mean? So all process that move, elevate or build up portion of the earth crust come under diastrophism. So definitely earthquakes and volcanoes are also a part of diastrophism, but we can classify them separately as sudden movements because their entire intent and the way they work is separate. Yes or no? And the way diastrophism works in the epiorogenic and orogenic is separate. तो इसलिए जब हम थोड़ा सा इसको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं तो इसको सेपरेट कर देते हैं. +1 के लेवल पे इसको एक ही तरह से रखते हैं. नाउ
In the process of orogeny, the crust is severely deformed into folds. Due to epiorogeny, there may be a simple deformation. Orogeny is the mountain building process, whereas the epiorogeny is the continent building process. जैसे हिमालयाज हैं तो दैट इज ओरोजेनिक, ठीक है. जहां पे भी ओरो वर्ड आ जाए ना, दैट इज माउंटेन. ओरोग्राफिक रेनफॉल फॉर एग्जांपल, तो विंड बेयरिंग मॉइस्चर, तो जब माउंटेन के साथ साथ चलेगा तो विंडवर्ड साइड में बारिश होगी, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल. ऐसी ओरोजेनिक मींस माउंटेन फॉर्मिंग. ओके, चले आगे. यहां तक समझ आ रहा है? कुछ डाउट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए, let's see. So, through the process of orogeny, epiorogeny, earthquakes, plate tectonics, there can be faulting, fracturing of the crust. All these processes cause pressure, volume, and temperature changes, which in turn induce metamorphism of rocks. तो यहाँ पे इनका बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, इन्होंने पूरा नहीं पढ़ाना आपको जियोमॉर्फोलॉजी. हमने भी बहुत स्पेसिफिक सी चीज करनी होती है, तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता. खैर, जो हमारे नोट्स हैं उसमें से जो भी स्पेसिफिक है वो सारा यहाँ पे एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या है, फॉल्टिंग क्या होता है, अपलिफ्ट क्या होता है, एवरीथिंग इज देयर. सो विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. ओके, नाउ वी जस्ट गोइंग इनटू द बेसिक्स फर्स्ट. बेसिक्स पढ़े होंगे ना, फिर वो वाले नोट्स फटाफट कर पाओगे. ओके, so volcanism. So this includes movement of molten rock or magma onto or towards the Earth's surface, and also formation of more intrusive and extrusive landforms. बेसिकली वोल्केनिज्म के अंदर यही था कि लावा ऊपर आएगा, अलग अलग तरह से एक्सप्लोड करेगा, बेस्ड अपॉन बेसाल्टिक है या विस्कस फ्लो है. जितना ज्यादा विस्कस फ्लो होगा उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव वोल्केनिक ब्रस्ट होगा. ठीक है. Many aspects of volcanism have already been dealt with in detail, so we're not dealing with volcanism here again. Then there is exogenic process, जो बाहर चल रहा है. अब exogenic process में हमने already देखा कि there can be wind, there can be water or chemical based, yeah. So there can be weathering and erosion. So various kind of exogenic processes are there. Okay. So let's see. So the exogenic processes derive their energy from the atmosphere, determined by ultimate energy from the sun, and also the gradients created by tectonic factors. Gradient जहां पे भी word आता है ना, उसका मतलब होता है difference. ठीक है. So between two layers or between two parts, then that is called gradient. Okay. तो या तो टेक्टोनिक फोर्सेस क्या है, अर्थ मूवमेंट वाली फोर्सेस, उनकी वजह से कोई ग्रेडियंट बन रहा है, या सन से एनर्जी आ रही है, उसकी वजह से एक्सोजेनिक है. तो जैसे विंड चलती है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चल रही है ना, तो इस वजह से कुछ ना कुछ चलेगा. एलिवेशन की वजह से रिवर वाटर का फर्क पड़ता है, फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन द रिवर इज फ्लोइंग. क्या ice being formed or melted is also dependent upon sun, so and the altitude definitely. So इस वजह से बोलते हैं tectonic factors, that is the earth related factors, and the sun related factors. So gravitational force acts upon all earth materials having sloping surface and tend to produce movement of the matter down the slope direction. Force applied per unit area is called stress. Stress is produced in a solid by pushing or pulling. कोई भी solid को आप push या pull करोगे, stress create करेगा. Now this includes deformation. कभी-कभी वो permanently उसकी shape बिगाड़ दे stress या strain की वजह से, तो then that's called deformation. Forces acting along the faces of the Earth's material are called shear stress. That means called separating forces. तो कुछ तोड़ के ऐसे side में करना चाहे तो that's called shear stress. Okay. And it is this stress that breaks the rocks and other material. Shear stress results in angular displacement or slippage. जब आपको landslide नजर आती है तो that is because of shear stress. Besides the gravitational stress, earth material becomes subjected to molecular stress that may be caused by a number of actions, among which there are temperature changes, crystallization, melting are the most common. So chemical changes in वजह से हो सकता है. Chemical process normally lead to the loosening of bonds between the grains. तो जो compacted इकट्ठा बैठा था, अब वो टूटना शुरू होगा. Dissolving of soluble minerals and cementing material. नमक की एक जो कोई भी आप डली सी ले लीजिए और उसको पानी में मिक्स करते हैं जब, तो बेसिकली उस टाइम पे उसके बॉन्ड लूज हो रहे हैं. ऐसे पत्थर मिट्टी का ले लीजिए, पानी में डाल दीजिए, तो इट विल स्टार्ट गेटिंग लूज एंड अप.
That is another form of weathering. So basic reason that leads to weathering, mass movement, erosion, and deposition is the development of stress in the body of the earth material. So that is the stress part. So essentially that is shear stress जो body को side में हटा रहा है. Then as there are different climatic regions on the earth's surface, the exogenic geomorphic processes, मतलब अर्थ के बाहर exogenic, geomorphic अर्थ को change करने वाले process vary from region to region. Temperature and precipitations are the two important climatic elements that control various processes. तो टेम्परेचर ऑफ बारिश पानी की वजह से सबसे ज्यादा एक्सोजेनिक जो है वो डेनिडेशन होना है. अभी डेनिडेशन टर्म जो है वो बार बार यूज होगा, तो इसका मतलब समझ लीजिए टू डेन्यूड मीन्स टू स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर, तो किसी चीज को उखाड़ देना ऊपर से, दैट्स कॉल्ड डेनिडेशन. ओके. वेदरिंग, मास वेस्टिंग, मूवमेंट्स, कोरोजन, ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डेनिडेशन. सो मास वेस्टिंग का मतलब होता है लैंडस्लाइड सिंपली. इरोजन मतलब धीरे धीरे ऊपर से बिखर रहा है. ट्रांसपोर्टेशन जो नदी के साथ चला जा रहा है. सो ऑल ऑफ देम आर एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन. विंड, वाटर. एक्सक्यूज मी सर. या प्लीज. सर ये डेन्यूडेशन का मतलब दोबारा बताना. डेन्यूडेशन का सिंपल मतलब है टू स्ट्रिप ऑफ, टू ब्रेक थिंग्स, चीजों को तोड़ना. ठीक है. अभी ये जो डेन्यूडेशन है इसके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डेन्यूडेशन है. वेदरिंग इज वन, तो जिसमें आप नोटिस करेंगे कि एक जगह से मिट्टी हटाई जाए हवा के साथ, तो दैट्स आल्सो वेदरिंग. पत्थर जो है वो धीरे धीरे पॉलिश हो जाए हवा के साथ, पानी के साथ, वो भी वेदरिंग है. तो वेदरिंग इज अ वेरी जनरल टर्म. मास वेस्टिंग, जब पहाड़ी इलाकों में आप जाते हो कभी, तो बारिश के टाइम पे लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं, है ना. दैट्स अ फॉर्मेट ऑफ मास वेस्टिंग. इरोजन, इट्स फॉर एग्जांपल लैंड इरोजन, सी इरोजन, ये सब चलता रहता है. सॉइल इरोजन, तो एक जगह से मिट्टी हट जाए जब, तो उसको बोलते हैं इरोजन. ठीक है. देन ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज डन बाय रिवर. नदी के साथ साथ बह के चला जाए. कई बार विंड से भी ट्रांसपोर्टेशन होती है. सैंड ड्यून्स में जाते हैं तो आंधियां चलती हैं, तो एक जगह से सैंड उठा के दूसरी जगह पे पहुंचा देंगे. दैट्स ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन. समझ आया? यस सर. सो अब डेन्यूडेशनल प्रोसेस देखिए. सो वेदरिंग is happening because of gravitational, molecular और chemical action. किसी भी कारण से weathering हो सकता है. Mass movement is generally due to gravitational force only. Landslide इसी वजह से हो रहा है कि नीचे की तरफ attracted है. Erosion or transportation is due to kinetic energy. That means energy of movement. Potential energy is because of certain kind of potential difference. It can be based on charge, it can be based on altitude, it can be based upon anything. Kinetic means with movement. Okay. So जैसे नदी की मूवमेंट है तो उसकी वजह से इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ठीक है. सो ये आपका प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन हो सकता है. वेरियस टाइप्स ऑफ डेन्यूडेशन प्रोसेसेस एंड देयर ड्राइविंग फोर्सेस. एक मैच द फॉलोइंग टाइप टेबल बना के आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है. अब जहां जहां पे बारिश बहुत ज्यादा पड़ेगी उधर इरोजन ज्यादा होगा, तो टोपोग्राफी खराब हो जाती है. एग्रीकल्चर के वहां पे ज्यादा चांसेस नहीं रहते. सॉइल भी इरोड हो जाते हैं. तो तब वहां पे सॉइल इरोजन बचाने के लिए हम पेड़ लगाते हैं ताकि उनकी जड़ों के साथ मिट्टी जो है वो चिपक के रहे. ठीक है. तो ये दीज आर सर्टेन वेज दैट वी कैन हैंडल दीज थिंग्स. नाउ मूविंग ऑन. So climatic factors being equal, the intensity of action of the exogenic geomorphic process depend upon the type and structure of the rock. तो कितना ज्यादा एक्सोजेनिक फैक्टर की वजह से डेन्यूडेशन होगा, ये उस पर्टिकुलर रॉक के ऊपर डिपेंड करता है. अगर सॉफ्ट रॉक होगा तो डेन्यूडेशन ज्यादा होना चाहिए, कम? ज्यादा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऑलरेडी लूजली बाउंड है. हार्ड रॉक होगा, क्रिस्टलाइन होगा, तो डेन्यूडेशन उतना स्लो होगा. इट्स लाइक दिस. ओके. नाउ द टर्म स्ट्रक्चर includes such aspects of rock as fold, fault, orientation, inclination, bend, presence or absence of joints, bedding planes, hardness, softness of the constituents, chemical susceptibility of the mineral constituents, permeability और impermeability. तो ये सारे कारणों से
या तो डेनुडेशन ज्यादा होगा या कम होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द रॉक इज परमिएबल, तो पानी उसमें जा सकता है। अगर पानी उसके अंदर जाएगा तो अंदर से रिएक्ट करेगा, अंदर से लूजन आउट कर देगा, जल्दी तोड़ेगा। ओके, देन केमिकल ससेप्टेबिलिटी ऑफ मिनरल, इसका मतलब है कि अगर वो पानी के साथ रिएक्टिव है, आमतौर पे तो वेदरिंग एजेंट हमारे पास वाटर ही है ना, तो अगर वाटर के साथ रिएक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल यू गॉट चॉक, चॉक मिट्टी, कैल्शियम कार्बोनेट के बेसिस पे भी रॉक है हमारे पास, है ना, तो आगे जाके उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो है अब पानी के साथ बड़े अच्छे से रिएक्टिव है, केमिकली ससेप्टेबल है, सो दे विल इजीली डाई आउट। फिर हार्डनेस और सॉफ्टनेस हमने देख लिया। देन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स, जहां पे जॉइंट है वहां पे हीट का, मैकेनिकल स्ट्रेस का, पानी का ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, वहां से टूटना आसान रहेगा उसको। बेडिंग प्लेन्स, सो वेयर इज इट लोकेटेड, so that will also decide whether it will have what kind of stress. Okay, so different types of rocks with differences in structure offer varying resistance to various geomorphic process. देखिए एक बेसिक सी लॉ है फिजिक्स के अंदर, उसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मैकेनिक्स भी बोलते हैं, इनर्शिया के बारे में बात करती है। ये कहती है दैट द बॉडी एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट or motion would like to continue in that particular state unless an external energy is applied to it. तो एक आलसी आदमी के बारे में सोचिए, अगर वो सो रहा है तो वो सोना ही पसंद करेगा जब तक उसको कोई उठा ना दे। तो ऐसे ही मेरे सामने माउस पड़ा है टेबल पे, अब जब तक मैं नहीं इसको हिलाऊंगा ये वहीं रहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया इट टॉक्स अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हर बॉडी अपने आप को एक पर्टिकुलर स्टेट जिसमें है उसी में कंटिन्यू करना चाहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए। तो यहाँ पे भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है उसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेरेंस करेगा और तब तक वो बॉडी रेजिस्ट करेगी किसी भी तरह की मूवमेंट को, इनर्शिया अपना बिल्ड करके रखेगी। सो पर्टिकुलर रॉक में बी रेजिस्टेंट टू वन प्रोसेस एंड नॉन रेजिस्टेंट टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल हवा से लेट से किसी पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, then and under varying climatic conditions particular rocks may exhibit different degrees of resistance to geomorphic process and hence they may operate at differential rates and give rise to differences in topography. So the effect of most of the exogenic geomorphic process are small and slow. बड़ी धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, आप रोज उठ के जाएंगे तो नोटिस नहीं पता चलेगा। हमें भी तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं ना, कभी किसी रिश्तेदार को 10 साल बाद मिलते हैं तो फिर वो कहते हैं अरे तो इतना बड़ा हो गया, then that happens, you know, इतना छोटा हो गया। So these things will happen with time. But अगर आप रोज अपने पेरेंट्स, तो आपको ये बात नहीं कह रहे ना, क्योंकि वो तो आपको रोज देख रहे हैं। So that's happened. So finally, it boils down to one fact that the differences on the surface of the Earth, though originally related to the crustal evolution, continue to exist in some form or the other due to differences in type and structure of the Earth's material, differences in geomorphic process, and in the rates of operation. So basically जिस तरह से धीरे धीरे चेंजेस आएंगे उसके बेसिस पे ही डिफरेंसेस हमें नजर भी आते हैं। वेदरिंग, सो वेदरिंग इज रिलेटेड टू व्हाट इज देयर इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो या तो हवा में चेंज होता है, या गर्मी होती है, तो या फिर बारिश पड़ती है, यही सब होता है वेदर के अंदर। तो उसकी वजह से जो मैकेनिकल या केमिकल चेंजेस आएंगे उसको वेदरिंग बोलते हैं। It is defined as the mechanical disintegration or chemical decomposition of the rocks through the action of various elements of weather and climate, that is wind, rain or heat. तीनों है क्या? So weathering processes are conditioned by many complex geological, climatic, topographic and vegetative factors. Let's say there is a line of trees. So then the wind action will be not that much weathering, no? क्योंकि line of trees उसको obstruct करके रखेगा, है ना। ऐसे ही लेट्स से यू बिल्ड इन माउंटेन एरियाज इफ यू गो, तो वहां पे जो टेरेस फार्मिंग करते हैं लोग, इस तरह से स्टेप्स में कल्टीवेशन करते हैं ताकि जो सॉइल की इरोजन है वो रनिंग ऑफ वाटर के साथ साथ ना हो। देखा है आपने टेरेस फार्मिंग, है ना, कभी भी पहाड़ों में जाओगे तो इस तरह से टेरेसेस के अंदर कल्टीवेशन करेंगे। ऑल दैट इज टू अवॉइड वेदरिंग। Whenever we are trying to make a building at that point of time, also the shape of the building, for example in hilly areas if you go, so they got this kind of a shape, you know, on top they will have a cone kind of a thing. Why?
So that is because they would want that the snow should just pass off, because वहां पे ये बारिश और ये सब चलता रहेगा, वहां पे फ्लैट रूफ्स नहीं है। हालांकि प्लेनर एरियाज में ज्यादातर जो घर बनेंगे वहां पे फ्लैट रूफ्स हैं। क्यों? कि हमारे यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बारिश वगैरह वाली, और अगर आएगी भी तो वी वुड वांट टू हैव रेन वाटर कंजर्वेशन काइंड ऑफ थिंग्स। या ओके, सो क्लाइमेटिक रिजीम्स एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मैंटल्स। तो अभी इसकी टेंशन ज्यादा मत लो, ये बाद में जब पूरा हम क्लाइमेट पढ़ेंगे या अलग अलग रेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे उसमें समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। So there are three major chemical weathering process: chemical, physical, or mechanical, and then the third one is biological. तीन तरह से weathering होती है। Chemical weathering is generally through water. Okay? So here it is solution, carbonation, hydration, oxidation, reduction. So all of them, various reactions can happen once the rock comes into contact with water or oxygen. Okay? So water and the air, that is oxygen and carbon dioxide, these are the two main agents of chemical weathering. ठीक है, सोल्यूशन के अंदर क्या है, पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन बीइंग एडेड और ऑक्सीजन बीइंग removed. Okay, carbonation is basically carbon dioxide getting added or carbon dioxide getting removed, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट फॉर्म उसका बनेगा। ठीक है, hydration is simply addition of water. So these are the three major ways. Okay? Then physical weathering, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं मेनली जो काम करेंगी। एक है ग्रेविटी जो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, दूसरा है एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर। ब्रिज के ऊपर से जब भी निकलते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बीच में थोड़े थोड़े गैप्स हैं। वो क्यों? क्योंकि हीट के टाइम पे ब्रिज को एक्सपैंड करना है समर्स के अंदर, विंटर के टाइम पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करने के लिए उसको एक जगह दी गई है, अगर नहीं देंगे तो ब्रिज के अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। देन वाटर प्रेशर, सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय वेटिंग। सो these are the physical weathering agents. So unloading and expansion, so removal of the overlying rock because of the continued erosion causes vertical pressure release, with the result that the upper layer of the rock expands, producing disintegration of the rock masses. तो आपको आइसोस्टेसी के बारे में मैंने बताया था, ऊपर का लेयर उड़ा दीजिए, नीचे से प्रेशर तो आ ही रहा है ना, इस वजह से ऊपर का रॉक में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। So fractures will develop roughly parallel to the ground surface, and in areas of curved ground surface, arced fracture tends to produce massive sheets of exfoliation slabs on the rock. तो इस तरह से fractures build होते हैं। ज्यादा अच्छे से देखना है तो ये देखो, so this kind of a thing, ऊपर का लेयर उड़ा दिया और ये जो इस तरह से fractures बनने शुरू हो जाएंगे। Yeah, so this is exfoliation. फाइन, तो ये सब अलग अलग तरह की वेदरिंग है, विल कम टू दैट इन मच डिटेल, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पेइंग मच अटेंशन हियर। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमने एजेंट्स ऑफ वेदरिंग समझने। ओके, देन टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन, सो वेरियस मिनरल्स एंड रॉक्स possess their own limits of expansion and contraction. हीट बियरिंग कैपेसिटी सारे मिनरल्स की अलग अलग होगी, तो उसके अंदर कोई टूटेगा, कोई जुड़ेगा, इस तरह से कोई मेल्ट हो जाएगा। सो with rise in temperature, every mineral expands and pushes against its neighbor. As the temperature falls, the corresponding contraction will take place. So because of the diurnal range or changes, मतलब day or night के temperature changes की वजह से, this will continuously keep happening. So this internal movement among the mineral grains of the superficial layer, that means ऊपर का layer, top layer of the rocks, take place regularly. So this process is more effective in dry climates and high elevation, where the diurnal range in temperature is drastic. Higher elevation पे आपको sunlight clear मिलेगा, clear skies, okay, and hot climate. Now, as has been mentioned earlier, though these movements are very small, they make rocks weak due to continued fatigue. Stress तो उसमें continuous है ना, तो इस वजह से जैसे जैसे ये weathering agents काम करेंगे, rock will become weak. The surface layer of the rock tend to expand more than the rock at the depth, क्योंकि heat ऊपर feel हो रहा है ज्यादा, नीचे तो नहीं हो रहा ना। This will lead to fracturing in the parallel surfaces, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला fracturing. Okay.
इधर भी यही लिखा है, diurnal range. The surface layer of the rock tend to expand more than the rock at the depth, and this leads to formation of stress within the rock, resulting in heaving or fracturing of the parallel to the surface. Exfoliation results in smooth, rounded surface in the rocks. Okay. So NCERT has been used here. It is just that now it has images. Okay. So due to differential heating and resulting expansion and contraction, the surface layers and their subsequent exfoliation from the surface results in smooth, rounded surfaces in the rocks. In the rocks like granite, smooth surfaced and rounded small to big boulders called tores form due to such exfoliation. Then there is freezing, thawing, and frost wedging. What is this? तो यहाँ पे heat की absence है. अभी ice की वजह से क्या क्या होगा? So frost weathering occurs due to growth of ice within the pores and cracks of rocks during repeated cycles of freezing and melting. तो freezing की वजह से ऊपर का structure बहुत cold हो जाएगा. Melting के time पे वो अंदर percolate कर जाएगा पानी. क्या हो रहा है? This process is most effective at high elevations in mid latitudes where freezing and melting is often repeated. Glacial areas are subject to frost wedging daily. In this process, the rate of freezing is important. Rapid freezing of water causes sudden expansion and high pressure. The resulting expansion affects joints and cracks and small intergranular fractures to become wider and wider till the rock breaks apart. Freezing और इनकी वजह से भी इस तरह से रॉक टूटता है, शैटर कर जाता है. ठीक है, बीच में से वो बर्फ की वजह से एकदम से एक्सपैंड करेगा तो इट विल स्टार्ट बिल्डिंग क्रैक्स एंड इट विल शैटर. Then next, salt weathering. So salt in the rock expands during thermal action, heat की वजह से, hydration, water absorption की वजह से, and crystallization. So many salts like calcium, sodium, magnesium, potassium, and barium have tendency to expand. Almost everything will expand on heating. Expansion of these salts depends upon the temperature. So high temperature ranges between 30 and 50 degrees Celsius. So will favor such salt expansion, and salt crystals in near surface pores cause splitting of the individual grain within the rock and will eventually fall off. धीरे धीरे heat की वजह से ही fall off होता जाएगा salt structure. That's the salt weathering. Okay. Same thing in NCERT, same thing in this notes also. Just a little bit extra is added from time to time in terms of images and all, so that it's much more readable. Okay. So इसीलिए मैंने साथ में शेयर किया कि इनको अभी से थोड़ा देखना शुरू कर दो. Then salt crystallization is most effective of all salt weathering processes. So in areas with alternating wetting and drying conditions, salt crystal growth is favored and the neighboring grains are pushed aside. Sodium chloride and gypsum crystals in desert areas heave up overlying layers of material, and with the result, polygonal cracks develop all over the heaved surface. So डेजर्ट एरिया के अंदर ये वाले सॉल्ट्स के अंदर ये सारा एक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. Biological activity and weathering. So what all is happening here? Let's see. So biological weathering is contribution to or removal of minerals and ions from the weathering environment and physical changes due to growth or movement of organisms. तो यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं like earthworms, termites, rodents, etc. So they will help in exposing new surfaces to chemical attack. वो अपनी burrows बना लेंगे और उसके अंदर फिर पानी भरेगा, हवा की वजह से, हर चीज की वजह से weathering होगा. Human beings by disturbing vegetation, plowing, cultivation, soil, so that also comes under biological weathering only, because we are the reason it is happening, not the nature. Okay. Decaying plants and animal matter help in production of humic, carbonic, and other acids, which enhance decay and solubility in some elements. Algae utilize mineral nutrients for growth, तो वो भी rock के कुछ nutrients को utilize कर लेंगे. Plant roots exert tremendous pressure on the earth's material, mechanically breaking them apart. कई बार आपने देखा है कि अगर आपके घर में कहीं पे थोड़ा सा moisture आना शुरू हो जाए किसी wall में, धीरे धीरे उसमें से plants भी उगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हवा के अंदर ही seeds तो है ही, है ना, तो वहां से that will start happening. Now, some special effects of weathering.
So this has already been explained under physical weathering process of unloading, thermal contraction and expansion of salt weathering. So exfoliation is a result but not a process. Flaking off of more or less curved sheets or shells, so ये भी एक result है. So exfoliation can occur due to expansion and contraction, जो आपने अभी देखा था कि रॉक का एक पूरा लेयर ऊपर से उतर गया. This is exfoliation. This is the result of it. Okay. Result of weathering. Now, significance of weathering. Essentially, it is forming new landform and breaking away the old landform. That's the significance. तो वही यहाँ पे लिखा है. Soil formation भी इसकी वजह से होगा. Mass movement किसको बोलते हैं? Landslide को बोलते हैं. Very simple. ठीक है. So this is mass movement, landslide. ठीक है. Then ये basically जितना ज्यादा wetness होगा, जितना ज्यादा gradient होगा, उतना ज्यादा mass movement होगा. बस यही यहाँ पे explained है. Slow movement happens when it is called creep. So creep is one type under this category, which can occur on a moderately steep soil covered slopes. तो अगर steep उतना नहीं होगा तो फिर slow movement रहेगा. ज्यादा steep slope होगा तो फिर rapid movement बोलते हैं. So there is creep and rapid movement, दो तरह की बोलते हैं. ठीक है. You don't need this much detail in this. Imagine an avalanche or a landslide. Both of them are mass movement examples. Okay. Then you can go through this, reading this at least once, and that's that. Then there is erosion and deposition. This is something that we study alongside the kinetic factor. So erosion involves acquisition and transportation of rock debris. तो एक जगह से rock debris को उठाया जा रहा है और दूसरी जगह पे लेके जा रहा है. So when massive rocks break into smaller fragments through weathering and any other process, erosional geomorphic agents like running water, groundwater, glacier, wind, waves, remove and transport it to other places depending upon the dynamics of each of these agents. So basically इनमें से किसी भी agent की वजह से running water, groundwater, sea waves or anything can have various kinds of erosion. एक जगह से तोड़ा और दूसरी जगह ले गए. That can happen. So it's easier to imagine than read. Yes or no? एक river के पास बैठ के it is easier to imagine erosion than to actually read about it. Then weathering, mass wasting and erosion are degradational process. Basically, they are removing things from one place and taking to somewhere else. एक होता है degradational, एक होता है aggradational. Aggradational में क्या होगा? Add on कर रहे हैं. ठीक है. So there are three states of matter. There's gaseous in the form of wind, liquid in terms of running water, and solid in the form of glacier. तो ये सारे के सारे kinetic energy create करेंगे. Kinetic energy किसके साथ calculate होती है? It is equal to half mv square. This is the formula for kinetic energy, where m is the mass and v is the velocity. जितना massive होगा उतनी ज्यादा kinetic energy. जितनी वेलोसिटी से चलेगा एक डायरेक्शन के अंदर तो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर के साथ. सो हाफ mv स्क्वायर. तो इस वजह से अब ग्लेशियर की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो उस हिसाब से वो उतना ज्यादा इरोजन भी क्रिएट करेगा मास की वजह से. राइट. देन नेक्स्ट कम टू डेपोजिशन. सो डेपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन. क्योंकि कहीं से कुछ चीज को तोड़ के लाया गया था तो कहीं ना कहीं तो जाके डिपॉजिट भी होगा. सो दैट इज द डेपोजिशन एस्पेक्ट. क्या? So the erosional agents lose their velocity and hence the energy on the gentler slope, and the material carried by them starts to settle. Obviously, जैसे जैसे kinetic energy खत्म होता चला जाएगा, तो it will not be able to carry it forward anymore, and then it will start depositing somewhere. Yeah. In other words, deposition is not actually the work of any agent. यहाँ पे कोई कर नहीं रहा, अपने आप से हो रहा है, क्योंकि energy available नहीं है. तो अभी वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा. The coarser material gets deposited first and fine ones later on. तो जो मोटे पत्थर होंगे वो पहले डिपॉजिट हो जाएंगे. फाइन मिट्टी है वो नदी के साथ साथ हवा के साथ साथ चलती चली जाएगी. So by deposition, depressions get filled up. ऐसा कहा जाता है कि ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं इंडिया के अंदर जो आज प्लेनर एरियाज नजर आते हैं, ये किसी टाइम पे ऐसे सॉसर शेप्ड थे, एक बाउल शेप्ड थे. और ये जो नदियां हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके साथ जो डिपॉजिट्स आए, इन डिपॉजिट्स ने धीरे धीरे इसको
फिल करना शुरू किया और ये प्लेन्स बन गए जो आज नजर आते हैं। So what happens to the surface of the earth due to erosion and deposition is elaborated in the next chapters, तो जहाँ पे आप landforms देखोगे कैसे कैसे बन रहे हैं। Next aspect here is soil formation. So soil की science को बोलते हैं pedology. Okay? So now a pedologist who studies soil defines soil as a collection of natural bodies on the earth's surface containing living matter and supporting or capable of supporting plants. So it's a dynamic medium, मतलब इसकी जो physical या chemical या biological activities हैं, they keep on changing continuously, okay? And it's the result of decay. Basically, the rock will decay and then becomes soil. If it compacts back, it can create a rock again, okay? So it has many characteristics that fluctuate with seasons. So it may alternatively be cold, warm, dry, moist, depending upon what are its constituents. So soil becomes adjusted to the conditions of the climate, landform, vegetation, and will change internally when these controlling conditions change. So अलग-अलग landform के अंदर, अलग-अलग vegetation के अंदर soil भी change होता रहेगा. Now, process of soil formation. So generally weathering. वेदरिंग की वजह से जो पेरेंट रॉक मटेरियल है उससे सॉइल बनना है, ठीक है? तो नथिंग मच हियर। तो पेपर में भी इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं आया था। सॉइल फॉर्मिंग के फैक्टर्स क्या हैं? पेरेंट मटेरियल कौन से रॉक से बना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एक्सेट्रा। टॉपोग्राफी, सो वेदर इट इज स्लोपिंग, वेदर इट इज प्लेन, व्हाट काइंड ऑफ टॉपोग्राफी इट इज। काइंड ऑफ क्लाइमेट, इट इज हॉट, कोल्ड, वेट, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज दिस। देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। सो ये 5 बेसिक फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर ये पूछे जा सकता है। पेरेंट मटेरियल के होने से सॉइल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सो लेट्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फर्स्ट। नाउ पेरेंट मटेरियल इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। पैसिव मतलब खुद की एक्टिविटी से कुछ चेंज नहीं होगा, अपने आप में इसकी वजह से सॉइल में कोई फर्क पड़ रहा है। सो पेरेंट मटेरियल कैन बी एनी इन सीटू और ऑन साइट। इन सीटू का मतलब ये है ऑन साइट, वेदर्ड रॉक डेब्री और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स। या तो वही था या कहीं से लाया गया, दैट इज द पेरेंट मटेरियल, ठीक है? तो सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर as well as the mineral and chemical composition of the deposits, whether they were there or they were brought. Nature and rate of weathering and the depth of weathering mantle are important considerations under parent material. So यहाँ पे हमें आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि लेट्स से अगर हमारे पास इग्नियस रॉक है ना, तो उससे किस तरह की सॉइल बनती। जैसे ब्लैक सॉइल आप देखेंगे तो वो इग्नियस रॉक अगर पेरेंट रॉक होगा तो वहां से ब्लैक सॉइल बनती है। जैसे इंडिया में डेक्कन ट्रैप्स के अंदर ब्लैक सॉइल है, उसको रेगुर बोलते हैं और कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये डेक्कन ट्रैप्स आर एसेंशियली लावाटिक ट्रैप्स। Basaltic lava flew from this place millions of years ago, and then at this point of time you're having over a period of time this gave result to black soil, ठीक है? डेक्कन ट्रैप्स के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, basaltic lava flows के टाइम पे। Now topography. So topography, like parent material, is another passive control factor. So ये याद रखना है कि कौन सा पैसिव है और कौन सा एक्टिव है। एक्टिव मतलब जो चेंज करता रहेगा, पैसिव मतलब जिसकी वजह से एक बार जो हो गया बाद में वो चेंज नहीं करेगा। The influence of topography is felt through the amount of exposure of a surface covered by parent material to sunlight and the amount of surface or subsurface and the amount drainage over and through the parent material. तो बेसिकली सन एक्सपोजर कितना है और सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे पानी का बहाव कैसा है, उसकी वजह से टॉपोग्राफी में चेंजेस आएंगे और सॉइल बनेगी। तो सॉइल विल बी थिन ऑन अ स्टीप स्लोप एंड थिक ओवर द फ्लैट अपलैंड एरिया। ऑब्वियसली थिक बोल्डर्स ऑफ और थिक पीसेस ऑफ सॉइल, जितना ज्यादा स्टीप स्लोप होगा वो तो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है? Over gentle slopes where erosion is slow and percolation of water is good, soil formation is favorable. तो ये prelims में statement based questions आते हैं। Soil over flat areas may develop into a thick layer of clay
with good accumulation of organic matter. Organic matter को humus भी बोलते हैं soil के अंदर जब होता है तो, giving soil its dark color. तो जितना ज्यादा humus content होगा उतना dark color होगा. In mid latitudes, the south facing slopes exposed to sunlight have different conditions of vegetation and soils than the north facing slopes with cool moist conditions have some other soil and vegetation. तो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स जितनी भी होती हैं माउंटेन्स के अंदर, तो वहां पे सनलाइट सारा टाइम रहेगा, तो उस वजह से देयर विल बी ट्रबल. तो वहां पे आमतौर पे तो डिजर्टिफिकेशन जैसी नजर आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सनलाइट होगा, मॉइस्चर लॉस बहुत ज्यादा होता है. कूल साइड पे थोड़ा मॉइस्चर लॉस कम होता है, और इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी ठीक ठाक होती है, ग्रोथ ठीक ठाक होता है. Now, climate. So this is an important factor in soil formation. What kind of climate elements are there? So there is moisture in terms of how much rainfall and everything is happening, precipitation, evaporation, humidity. Then there is temperature. So seasonal and diurnal variation, matlab day-to-day variation. Now precipitation gives soil its moisture content, which makes the chemical or biological activity possible. Excess of water helps in downward transport of soil components through the soil and the deposits the same down below. So alluviation and illuviation दो चीजें हैं, ठीक है. तो मिट्टी के ऊपर के लेयर से नीचे की लेयर की तरफ अगर न्यूट्रिएंट्स आए तो उसको बोलते हैं एलुविएशन, और जो नीचे आके डिपॉजिट हो जाते हैं उसको बोलते हैं इल्यूविएशन. आते टाइम एलुविएशन, डिपॉजिट होने पे इल्यूविएशन. In climates like wet equatorial rainy areas with high rainfall, not only calcium, sodium, or magnesium, potassium, but also a major part of silica is removed from the soil. The removal of silica from the soil is called desilication. तो basically nutrient loss भी बोलते हैं इसको, लीचिंग भी बोलते हैं, वो भी एक प्रोसेस है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश के टाइम पे ऊपर से नीचे जो न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ऊपर की लेयर में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगा तो एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं. जहां पे बहुत ज्यादा बारिश आती है जिन एरियाज में, दे आर नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ सॉइल. देन नाउ व्हेनेवर इट इज इवेपोरेटिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द न्यूट्रिएंट्स विल बी ट्रांसपोर्टेड अप, क्योंकि पानी के साथ साथ अब ये न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर आएंगे. कैपिलरी एक्शन बोलते हैं इसको. सो इन ड्राई क्लाइमेट्स, because of high temperature, evaporation exceeds precipitation. Hence, groundwater is brought up to the surface by capillary action. And in the process, water evaporates, leaving the salts in the soil. Such salts form into a crust and is known as crust in the soil known as hard pans. तो hard pans आपको मिल जाएंगे जहां पे भी आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पे हीट ज्यादा हो तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं लैंड के अंदर. तो दे आर हार्ड pans like this. Okay? So, and in the areas of intermediate precipitation conditions, calcium carbonate nodules or conchers are formed. Temperature acts in two ways, increasing or reducing chemical and biological activity. Chemical activity is increased in higher temperature and reduced in cooler temperature. Simple. And stops in freezing conditions. पानी जब फ्रीज ही होगा तो उसने क्या केमिकल एक्टिविटी करनी, ठीक है. दैट इज व्हाई ट्रॉपिकल सॉइल्स विद हाई टेम्परेचर शो डीपर प्रोफाइल्स, कि वहां पे केमिकल एक्शन नीचे तक चलेगा, ठीक है. एंड इन फ्रोजन टंड्रा रीजन, दैट इज इन पोलर एरियाज एंड सो ऑन, सॉइल कंटेन्स लार्जली मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल. ओके, सॉइल प्रोफाइल डीप कहाँ पे ज्यादा होगा, जहां पे केमिकल एक्टिविटी ज्यादा चल रहा है, और वो कहाँ पे पॉसिबल है, जहां पे हीट ज्यादा है, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर. ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में. ओके, नाउ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दैट्स बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सो दे विल आल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. जैसे आप पढ़ते हो लेग्यूमिनस प्लांट, पी एंड ऑल, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ना. So nitrogen fixation can happen, and rhizobium is a type of bacteria which lives in the roots of the leguminous plants and help in the nitrogen buildup in the soil. तो वो अपने आप में एक macronutrient है. Then time. Over a period of time, only soil will get formed, and soil will be depleting or increasing in terms of nutrients also. Yeah. So that's the time factor. So this completes our discussion on this chapter. Please go through it very carefully. Once again, very important from UPSC prelims point of view, this particular chapter. Okay,
सो इनमें से ये बताइए, डेब्री एवलांच कैन बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ, हाँ जी, सी, रैपिड फ्लो ऑफ मास मूवमेंट, यस वेरी गुड। मास मूवमेंट की एग्जांपल लैंडस्लाइड, ठीक है, और एक एवलांच होता है। देन which one of the following material is affected by hydration process? ग्रेनाइट और क्वार्ट्स तो हार्ड क्रिस्टल्स हैं, क्ले की हाइड्रेशन हो सकती है और सॉल्ट्स एक जनरल टर्म है। तो हाइड्रेशन से सबसे जल्दी कौन सी चीज इफेक्ट होगी? डी सर, सॉल्ट। सॉल्ट। बट अब सारे सॉल्ट्स क्या हाइड्रेटिंग सॉल्ट होते हैं? क्या वो पानी पिकअप करेंगे? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर अ व्हाइल, लेटर ऑन वी कैन डील विद इट, बिकॉज रिएक्टिवनेस के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे। अफेक्टेड बाय का मतलब क्या है ये नहीं ना इन्होंने क्लियरली बताया हुआ। विल इट बी केमिकली अफेक्टेड बाय और फिजिकली अफेक्टेड बाय? तो फिजिकल इफेक्ट तो फिर क्ले के ऊपर भी आ जाएगा, केमिकल इफेक्ट सॉल्ट्स में आएगा। तो अफेक्टेड बाय इज नॉट क्लियरली गिवन इन दिस क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ग्रेडेशनल प्रोसेस? हाँ जी, ग्रेडेशनल प्रोसेस इनमें से कौन सा है? वेदरिंग और इरोजन ग्रेडेशनल प्रोसेस है, जिससे भी कुछ इरोजन होगा दैट्स कॉल्ड अ ग्रेडेशनल प्रोसेस। सो जस्ट रिमेंबर दिस। जैसे हम पढ़ रहे थे ना रिवर के साथ देयर इज इरोजन, तो दैट्स अ ग्रेडेशनल प्रोसेस। ओके, डेपोजिशन इज एक ग्रेडेशन, देन देयर इज डिग्रेडेशन। याद है अभी देखा था? हेलो, तो ग्रेडेशनल Yes, किसकी sir. वजह से होता है? इरोजन की वजह से होता है, ठीक है, दैट्स दैट। अब इसमें से एक क्वेश्चन आप ट्राई करना, 150 वर्ड्स। सो exogenic geomorphic process derive their ultimate energy from the sun, explain। ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। exogenic geomorphic process derive their ultimate energy from the sun's heat, explain। पूरा चैप्टर पढ़ के फिर देखना, उसमें आइडेंटिफाई करना कि जो हीट है वो कहां कहां पे रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। सो heat as an agent, whether it was and sun's heat, not the interior heat of the earth, उसको नहीं मेंशन करना। सन्स हीट कहां कहां पे फंक्शनल था उसके बारे में बात करके देन यू वर्क इट आउट, ठीक है। कल को फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वर्कआउट करेंगे। फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे। Thank you, इफ यू sir. हैव एनी